Hello students, good morning to you all. In this video, I am going to explain about the ecosystem. This is the continuation of the chapter Our Environment of class 10. This is the chapter Our Environment, in which today I am going to discuss about an ecosystem. आज हम लोग इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे. What do we mean by an ecosystem? First of all, we need to know the definition of this ecosystem. An ecosystem is a sum total of living organisms, environment, and the process of interaction between them. An ecosystem is the sum total of लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट. लास्ट वीडियो में मैंने एनवायरनमेंट के बारे में बताया था. तो ये मिक्सचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट और उन दोनों के बीच में होने वाले इंटरैक्शन को हम इकोसिस्टम कहते हैं. दिस इज व्हाट इज नोन एज इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक एन इकोसिस्टम ऑफ गार्डन. एज आई टोल्ड यू, सम टोटल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में मैंने आपको बताया था एबायोटिक सब्सटेंसेस में ऑल्सो कम. तो अगर मैं गार्डन की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट द गार्डन, इन गार्डन व्हाट डू वी सी? वी कैन सी द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, flowers, plants, creepers, herbs, many things are there. These all are living creatures. These all are living creatures. But if we talk about this environment, what kind of environment is there? Then we can say living creatures plus sun, air, wind, temperature, because of sun temperature, rainfall. These all are interacting with each other. ये दोनों एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं और तब एक गार्डन का निर्माण होता है, तो एक गार्डन बनता है. But what is why do we need abiotic substances? How do they help? ये कैसे हेल्प करते हैं किसी भी इकोसिस्टम को इंटरैक्शन में? They both interact with each other in such a way that the growth, reproduction and other activities of the living organisms are not feasible without these non-living components. The growth of the plants or animals, reproduction process of the plants and animals, and so many other activities can't be without these non-living components. So that is why I have told you, इसी वजह से मैंने आपको बताया कि ये जो इकोसिस्टम है ये सम टोटल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट का और उन दोनों के बीच के इंटरैक्शन, प्रोसेस ऑफ इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. So now we are going to know about the ecosystem. This ecosystem can be divided into two. That is, the first one we can say natural ecosystem and the second one we can say an artificial ecosystem. Natural ecosystem and an artificial ecosystem. Natural ecosystem में ocean आ जाएंगे, sea, river, pond, lakes, mountains, deserts, लैंड एरियाज. ये सारे इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल इकोसिस्टम है. व्हाट दे आर नेचुरल इकोसिस्टम. नाउ वी हैव टू गो फॉर एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में भी एक्वेरियम, क्रॉपफिल्स बिल्कुल आर्टिफिशियल है, मैन मेड, गार्डन, पार्क, botanical garden and whatever zoological parks you see, these all are an artificial ecosystem. Cities, villages, they are an artificial ecosystem. And they may also be categorized into temporary ecosystem and permanent ecosystem. So now we are going to know more about this ecosystem. As I have told you, right now I told you that ecosystem is the sum total of non-living creatures and the environment. So what are this?
we are going to know. मेजर कॉम्पोनेंट्स, ये जो इकोसिस्टम है इसके जो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं वो है बायोटिक एंड एबायोटिक. आइदर इट इज आर्टिफिशियल और इट इज नेचुरल. चाहे वो नेचुरल इकोसिस्टम हो या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो, इसके दो कॉम्पोनेंट्स हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल बायोटिक कॉम्पोनेंट. So let's start about knowing about the biotic components. Biotic components means all living creatures. All living creatures are biotic components. Means what? Plants, animals, human beings, and you can say that this decomposers, microorganisms, these all are abiotic components. इन्हें हम क्या कहते हैं? Abiotic components. Abiotic components, biotic components, I'm sorry, they are called biotic components. Depending upon the mode of nutrition, these biotic components can be categorized into various parts. Mode of nutrition के ऊपर अगर हम देखें, if depending upon the mode of nutrition, they can be categorized into many groups. What are these groups? These groups are producers. पहला ये क्या है? पहले कौन से है depending upon the mode of nutrition? Producers. Producers are photosynthetic. जितने भी green plants हैं जो कि photosynthesis process के द्वारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं. तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स. इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स. सो बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे कैटेगराइज किया. तो फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, द सेकेंड वन इज प्राइमरी कंज्यूमर और यू कैन से हर्बीवोर्स. आप इन्हें हर्बीवोर्स भी कह सकते हैं. सेकेंडरी कंज्यूमर, आप इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे. हु आर द सेकेंडरी कंज्यूमर? सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोर्स. देन टर्शियरी कंज्यूमर्स. Tertiary consumers. Who are these tertiary consumers? Tertiary consumers are secondary carnivores. Secondary carnivores जो हैं वो tertiary consumers हैं. Then quaternary consumers. Who are they? They are top carnivores. मैं आपको अभी examples भी बताऊंगी. मैंने बोला on the basis of their mode of nutrition they are categorized into various groups. What are these groups? Producers, green plants. Primary consumers, herbivores. Who are these herbivores? Herbivores are deer, rabbit, elephants and many other animals. They only eat plants, so they are herbivores. Then secondary consumers, they are carnivores. Who are these carnivores? These carnivores are frogs, lizards, small fishes, birds. They are called carnivores. इन्हें हम carnivores कहते हैं या secondary consumers कहते हैं. Tertiary consumers क्या हो गए? Tertiary consumers को हम secondary carnivores भी कहते हैं. Who are these secondary carnivores? ये वैसे carnivores हैं जो इन्हें खाते हैं. They are the carnivores which eats the secondary carnivores. So who are they? They are wolves. हम example में wolves and foxes दे सकते हैं. They are wolves and foxes. Then who are quaternary carnivores? Or you can say top carnivores. These top carnivores are the strongest one. Lion, tiger, peacock, eagles.
They are the top carnivores. There are many more. Why they are called top carnivores? You know, they are not killed and eaten by any other animals. इन्हें कोई दूसरे जानवर मार के नहीं खाते हैं. ये टॉप कार्निवोर्स में आते हैं. They kill other animals and eat them up. So these all are the biotic components. They are the biotic components of an ecosystem. So now let us go through the abiotic components of an ecosystem. अब हम जानेंगे कि इकोसिस्टम के abiotic components कौन हैं, जिनसे कि ये biotic components इंटरैक्ट करते हैं और एक इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं. These abiotic components are non-living creatures, or you can say climatic factors, you can say inorganic substances, and you can say organic substances. It's okay. So non-living components are the abiotic. Non-living components are the abiotic components of an ecosystem. Who are non-living creatures? Non-living creatures can be classified into three. Non-living creatures are also can be classified into three. The first one, inorganic components like nitrogen, carbon, phosphorus. ये सारे जो otherwise water, H2O, ये जो inorganic substances हैं, ये biogeochemical cycles में involved हैं. They are involved in biogeochemical cycle. Then what do we mean by organic substances? They are carbohydrate, they are lipid, they are protein. So these organic substances, what are their function? Their function is to form. ये क्या फॉर्म करते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं, पर ये abiotic component है. So can we imagine life without organic components? No. When they combine, a living organism is formed. Now the third one is climatic factors. तीसरे क्या हो गए? Climatic factors हो गए. We know well about climatic factors. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको climatic factors के बारे में बताया था. Climatic factors are temperature, means what? Sun. Wind means what? Air. Humidity means moisture, or you can also write moisture. Then rainfall means what? Water. So these are the climatic factors. These are three categories of abiotic components. So now it is clear that an ecosystem is formed of biotic and abiotic components. Biotic I have already explained, and abiotic also I have explained. So together they form an ecosystem. Why? What happened? इनके फॉर्मेशन से क्या होता है किसी इन्वायरमेंट में? टू मेजर फंक्शंस, ये दोनों मिलकर दो मेजर फंक्शन करते हैं. वो दोनों मेजर फंक्शंस क्या है? टू मेजर फंक्शंस आर डन with these biotic and abiotic components. The first one is flow of energy. Flow of energy among living organisms. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में फ्लो ऑफ एनर्जी को मैनेज करते हैं ये बायोटिक एंड एबायोटिक सब्सटेंसेस. एंड द सेकेंड वन इज साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स को साइकिल करना, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. So this is all about an ecosystem. In my next video, I am going to make you understand about the flow of energy among the living organisms and the cycling of nutrients. So please wait. Don't forget to make the notes and learn this topic. And once again, I request you to write the comment, like and subscribe, and allow to share this video to the other students. Thank you all of you.